Best teachers पढ़ाए तो simple लगे everything. Leaderboards and quizzes से Amazing. learning हो जाए happening. समझ आएगा तो मजा आएगा. Vedantu. Learn live online. To attend a free live class, download the app now. Hey guys, what's up? This is your captain. Let's start our Killer 5 series जहां पर हम 5 कुछ अच्छे questions we are going to discuss, ठीक है? So without wasting any time, today's topic is alkyl halide and aryl halide, ठीक है? So without wasting any time, let's start the first question, ठीक है? You can pause the video and answer for yourself. बहुत अच्छा सवाल है. This question came in Main 2016, ठीक है? So very nice question. You can pause. Yes, and try it out. ठीक है. तो let me help you here now. Let's start the question. क्या है ये? देखिए बेटा, NBS जो होता है N-bromosuccinamide, it's a very good reagent. It actually does allylic substitution. Allylic position पे bromine will come. This is the reagent, and only one time it will happen. Now, if you notice your compound, boys and girls, if you notice your compound, there are two probabilities. If you notice, radical can, अच्छा, it happens by free radical mechanism, ठीक है? There is a possibility that allylic substitution can happen on these two sides. दो जगह हो सकता है, थोड़ा साफ बना देता हूँ. दो जगह allylic substitution हो सकता है. It can happen at two places. I am writing those two places. One is this, one is this. Now the question is where allylic substitution should happen. पहला step देख रहे हैं. N-bromosuccinamide is going to give bromine at this allylic place, ठीक है? Allylic substitution होता है. Now there is a probability of two positions and only one time it will happen. एक ही जगह होगा. मुझे एक बात बताओ, bromine if it will come here, boys and girls, there is a very big group, tertiary butyl group is there. Heavy repulsion will happen. So bromine will say, "Arey, I don't want any repulsion. Let's go on that side where I am quite stable." And which is that side? This is the side. यहाँ पे bromine आके चिपक जाएगा. There will be allylic substitution. Step number 1 is over. Step number 2 is very interesting, boys and girls. Step number 2 is very very interesting. जरा ध्यान दीजिएगा. They are saying K2CO3 H2O. इनकी presence डाल दी यहाँ पर. Now this is a very cunning way of saying that we have a basic, slightly basic solution. Let me tell you how. K2CO3 react with water beta to give you HCO3 minus plus OH minus. This will be your base. Acha, this is a, whenever you want to create a very slightly basic condition, go for K2CO3 and water. Actually, it will give a very slight basic condition, ठीक है? Slight basic condition, so basic alkaline medium is maintained because of this reagent. This is a very good method of making a alkaline medium, ठीक है? तो हमने यहाँ पे slightly basic medium डाल दिया है. तो boys and girls, this particular compound, you know, has a tendency to this bromine, ये टूट जाता है, कुछ इस तरीके से टूटता है, देखो. It will break like this. Radical will come here. ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है? तो it's a quite stable, ये टूट जाता है यहाँ पर और कार्बोकेटायन बन जाता है. I'm sorry. अच्छा खासा स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है बाद में. इट हैज अ टेंडेंसी इन द बेसिक मीडियम, इट कैन एक्चुअली गो फॉर दिस. आराम से टूट के अच्छा खासा स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाता है. एंड व्हाट विल हैपन, योर बेसिक मीडियम OH माइनस विल कम एंड अटैक हियर. एंड इफ यू कैन नोटिस व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए. यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी. इफ यू नोटिस, इफ यू आर स्मार्ट इनफ ना, जरा देखिए, डी तो बिल्कुल ही खराब ऑप्शन है, सीधे आउट ऑफ द पिक्चर. मतलब वो बोल रहा है रिएक्टेंट यू आर टेकिंग, रिएक्टेंट इज अनरिएक्टेड. तो बिल्कुल ही खराब ऑप्शन है. COH आने का कोई सवाल ही नहीं है. NBS डाला है, कोई COH आने का मतलब एसिड लगने का कोई सवाल ही नहीं. C का भी कोई काम ही नहीं था यहाँ पर, ठीक है? ये भी आप लोग समझदार हो, आप जानते हो NBS डाला है, कैसे C डबल बॉन्ड हो. मतलब सारे ऑप्शन ही इतने स्टूपिड थे. इफ यू आर वेरी, हल्का सा भी आप में दिमाग है कि NBS इज एक्चुअली, यू नो, इट्स N-bromosuccinamide एंड इट इज गोइंग टू गो फॉर allylic substitution, आप आराम से कर देते. तो आपको आराम से पिक्चर क्लियर हो जाती. ऑप्शन ए वुड बी द आंसर. बेटा, आई एम स्टिल सेइंग, एक और यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी है विच इज नॉट एक्चुअली, मेरे हिसाब से देखा जाए, इवन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर. ए के अलावा भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी. व्हाट विल हैपन इफ यू नोटिस एनी गुड बुक, एनी टेक्स्ट वेयर लिटरेचर, यू नो, डेटाज आर गिवन, it has been mentioned clearly that allylic bromine in slightly basic medium, also in the presence of ammonia. अच्छा, ये basic medium, this basic medium is not very strong, very slight basic, ठीक है? It's just like nearly to ammonia.
not like NaOH. It is not very strong basic medium, it is a very slight basic medium. Even in the presence of this allylic bromide or allylic bromine, actually allylic bromine can go for elimination reaction. Actually, if you will look into it, the more viable and more correct answer would be this conjugated alkene. ये इसमें बदल जाता है in the presence of slightly basic medium. पर खैर, this option is not mentioned here, so we'll not go into the detail. But if someone will ask this, you will check in your slide, in your books also, where data are given. 95% of the reactant will convert into this form. इस form में आ जाएगा. It will be going for elimination reaction and conjugated alkene would be formed. ठीक है? क्या होता है whenever allylic bromide is there, allylic bromine is there, and in that if you will add a basic medium, it has a tendency to go for elimination. 95% of the product would be elimination. तो ये भी एक अच्छा option बन सकता है. Since it is not given, the question was damn easy. आपका आंसर क्या था यहाँ पर? A would be the answer. ठीक है? I hope it is clear. आगे बढ़ता हूँ. This is a beautiful question. Pause the screen and try to answer for yourself. बहुत अच्छा सवाल है. Pause the screen, pause the video, and you can answer. ठीक है? So let me help you. Aniline react with mixed acid. मतलब aniline reacts with mixed acid, HNO3 and H2SO4. Basically, you are doing, nitration of aniline at 288 Kelvin to give 3 products. Haha, this is the major part. Let me tell you, beta. Very, very important part. Check this out. When you will take aniline and you will react here HNO3 and H2SO4. ठीक है? It will go for nitration. So we were expecting ortho and para product. Ortho and para product. One product would be, this is your ortho product, and this is your, which you were thinking normally, this is your para product. But to our surprise, in the case of annihilation, nitration of aniline, to our surprise, one more product would be developed. And you know what? It was actually in quite a good amount. Quite a good amount. Can you guys tell me what is the reason? Because whenever you react with, you have a reaction of aniline in acidic medium, it will become anilinium ion, NH3+. And this entire group is a very strong -I group. So what will happen? It will deactivate the benzene ring, so the NO2 will attack, at meta position also. To our surprise, this compound was actually formed in a fascinating amount, 47% बड़ा था ये. Remaining, ये जो आपका ortho product होता है, ये सिर्फ 2% ही बन पाया. To our surprise, your meta product was actually formed, and it was formed in good amount. 47% amount में बन गया था. I hope this point is clear. So the remaining कितना हो गया? 51% is your para product. ठीक है? So let us see. In the question they have said P is 51%, so this is P. Q is 47%, this is Q. And R is 2%, this is your R. So I hope you identified. Ortho आपका बहुत कम बनता है, because यहाँ पे repulsion भी चलती है ना? तो यहाँ repulsion का factor कम हो जाता है. That's why it goes for para product. 51% बन जाता है. Meta product, to our surprise, is formed, and it will be actually in a good amount. 47% meta product बनता है, and ortho product would be very, very less. ठीक है? इतना समझ आ गया? And R in this question is ortho product. यहाँ तक हमने समझ लिया. If you read the question, beta, if you read the question, whatever they have done with R. R is the ortho product. तो हमें यहीं से start करना है. So I am starting with our ortho product. मैं यहीं से लिखता हूँ. So our ortho product was NH2, NO2. First step is protection. This is your step number 1. First step is protection. Protection करने से बेटा क्या आ जाएगा? What you will get? You will get NH COCH3, है ना? COCH3. यहाँ पे ये लग गया, साथ में NO2. Second step is beta what? Second step is bromination. So you will get only at para position. I hope you understood, because protection कर दिया है आपने. तो यहाँ पे मिल जाएगा NH COCH3 and यहाँ पे आ जाएगा NO2 and here it will be bromine. Next step is hydrolysis. So this protection would be gone. So I am writing 3 step and I am writing 3rd and 4th एक ही साथ. After that you will get NH2 and in that you are making BDC, benzene diazonium chloride. So I am directly writing here after 3rd and 4th what you will end up with beta? You will end up with N2 plus NO2 Br. बहुत बढ़िया. Then after that you are doing ETOH. It is a very good method of making benzene. This will be gone and you will get
यू नो आफ्टर योर 5th स्टेप यू विल गेट, यहाँ पे H लग जाएगा, तो मैं H लगा ही ना, मैं सीधे ऐसे लिख देता हूँ, आई एम राइटिंग विदाउट H, ठीक है, विदाउट H मिल जाएगा, यहाँ होगा NO2 एंड हेयर बेटा इट विल बी अ ब्रोमीन. सो दिस इज योर कंपाउंड, दिस इज योर कंपाउंड, विच कंपाउंड, दिस इज योर कंपाउंड S. तो कंपाउंड S बन गया, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. मैं आगे बढ़ जाता हूँ, यहाँ पे आपका NO2 लगा हुआ है, दिस इज योर NO2, ठीक है, दिस इज योर NO2. सो आई एम रिमूविंग इट, मैं आगे बढ़ जाता हूँ. सो नाउ वी हैव S, लेट्स टॉक अबाउट S. S इज व्हाट? Here you have NO2 and here you have bromine. Now starting from S, first is SnHCl, reduction of your NO2 group to NH2. तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? You will get NH2 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? Bromine. Next step is BrH2O excess. Boys and girls, 2, 4 हर जगह लग जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा 2, 4, 6 हो जाएगा, राइट? तो क्या बन जाएगा बेटा? You will end up with NH2 is this. इसके रिस्पेक्ट में देखो, यहां लगेगा दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे, क्या लग जाएगा? ब्रोमीन, बिकॉज NH2 इज अ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो कुछ ऐसा मिल जाएगा. नेक्स्ट स्टेप इज डायजोटाइजेशन एंड नेक्स्ट स्टेप इज H3. उसके बाद H3PO2. इट्स अ वेरी गुड मेथड ऑफ यू नो रिमूविंग NH2 प्लस एंड इन दैट प्लेस हाइड्रोजन विल कम. सो कैन यू सी द आंसर बॉयज एंड गर्ल्स? कैन यू सी द आंसर? योर आंसर वुड बी ब्रोमीन. Then here also bromine, here also bromine. मैं यहाँ पे 2 स्टेप एक साथ लिख दिए, 3rd and 4th continuously I have written. It's a very good method of removing N2 plus. Sandwich reaction में ही है ना? And वहाँ पे हाइड्रोजन लग जाता है उसकी जगह. You will get hydrogen. So boys and girls, this is your product. This is your entire product. आपका ये पूरा प्रोडक्ट बन गया. देखते हैं ऑप्शंस में क्या है. Do we have this option? कहीं ना कहीं ऐसा ऑप्शन जरूर दिया होगा. Yes, आपके सामने ही है. D is the correct answer. So what is the correct answer? Boys and girls, correct answer is D. Just now entirely we have proved. I hope सबको समझ आ गया. Very good question. So I have explained each and every step. आगे बढ़ता हूँ बेटा. Moving on. Beautiful question of JEE Advanced 2018. A very beautiful question. Take your time. Pause the screen. Take your time. Pause the video. So let me help you now. Let me help you now. देखो. If you look at the compound, X is giving you this enantiomerically pure compound. Azide is there. If you notice, last reagent was azide, right? N3 minus. Azide is there, and it is, you know, inverted on the inverted dotted line. It is from the back side of the board. If you notice carefully, boys and girls, very simple hint is right in front of you. Very easy and very nice question. I loved it. ETO, Me2CO, and this is DMF, ठीक है, dimethyl formamide, है ना? Boys and girls, all these are polar aprotic solvent, polar aprotic solvent. And if you look at the reagents, this is PBr3, B बड़ा है, this is PBr3. And if you look at your reagents, they are strong nucleophiles. They are all strong nucleophiles. Nucleophiles are strong, and your reagents, your solvent is polar aprotic. It is a clear indicative that reaction has to be which reaction? SN2 reaction. And in SN2 reaction, attack happens from the back side, right? Always inversion of product you will end up with. Now pay attention to this, how we will solve. यानी कि इतना clear हो गया है, it is an SN2 pathway. So let us try to find the answer and let us move from the back. हम पीछे से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? We will move from the back, from the product side to the reactant side. We are going to find the answer. Pay attention to this question. बहुत प्यारा सवाल है. देखो जरा, azide आ रहा है पीछे की तरफ से, यानी कि बेटा कंपाउंड में समथिंग लाइक दिस मस्ट बी देयर. मिथाइल ऐसे रहा होगा, ऐसे का ऐसा ही रहा होगा. आयोडीन जो होगा वो शायद क्या पूरा 100% श्योर हूं मैं, इट शुड बी टूवर्ड्स यू, वो आपकी तरफ आने वाला है. इफ दिस इज द बोर्ड, इफ दिस इज द प्लेन, आयोडीन मस्ट बी कमिंग टूवर्ड्स यू. फ्रॉम देयर अजाइड मस्ट हैव अटैक फ्रॉम द बैक, तभी वो ऐसा मिला है आपको. इन्वर्टेड प्रोडक्ट है पूरा. इसका मतलब आयोडीन अगर ऐसा रहा होगा, व्हाट शुड बी द कंडीशन? हाउ ब्रोमीन मस्ट हैव बीन देयर. ब्रोमीन कैसा रहा होगा जरा बताओ. ब्रोमीन कुछ ऐसा रहा होगा बेटा, समझ आ रहा है? बिल्कुल उल्टा खेल रहा हूं मैं, आई एम प्लेइंग रिवर्स. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? तो ये उल्टा रहा होगा, कुछ ऐसा लगा दिया मैंने. अब अच्छा, अगर आप देखो कंपाउंड में एल्कोहल्स दे रखे हैं, यहाँ पर सब जगह OH दे रखे हैं, यानी कि जो आपका X रहा होगा वहां पे देयर मस्ट बी एन OH ग्रुप, एंड यू आर सेइंग अटैक इज SN2 एंड P द प्रोडक्ट आफ्टर फर्स्ट
step is coming like this. यानी कि OH कैसा रहा होगा बेटा? OH must be towards you. From if this is the plane, the OH group must be coming towards you. ठीक है? And then only bromine will go backside of the board or backside of this particular plane. तो answer would be B. I hope you understood. A very beautiful question. हमने एक एक करके पीछे से start किया. Very beautiful question. I love this question. I hope it is clear. It's a very good test that you know SN2 reactions or not. Polar aprotic solvent थे, nucleophiles were strong, and you will always end up with inversion product. Back attack होने वाला है, right? 100% तो नहीं होता, but we say it is always 100%. 99% रहता है, थोड़ा कम रहता है, but we say theoretically it is always 100%. I hope everyone knows. बहुत बढ़िया. बहुत प्यारा सवाल और बहुत ही easy सवाल. अगर आप देखो बेटा, you can pause the screen and let's get aside. Try to answer this question. A beautiful question. All right. So let me help you, beta. If you notice a very strong base, beta, whenever you get RO minus, है ना? या फिर if you get alcoholic KOH or you get ROH plus KOH, in place of KH you can also use NaOH. These are very strong base. So they have a tendency for elimination reaction. Tertiary butoxide is no different. This is nothing but tertiary butoxide. It is a very, very strong base and very bulky base. It will always go for elimination. यहाँ देखिए ब्रोमीन तैयार है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक एल्कीन बन जाएगा. If you look at the option, this question came in advanced 2017. मुझे लगता भी नहीं एडवांस के लायक का क्वेश्चन है. मेंस के आराम से आ सकता है ये बेटा. बड़ा ही क्लियर कट दे रखा है. टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. हीटिंग इज ऑल्सो डन. आपको ब्रोमीन भी दिख रहा है. एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी. एंड इफ यू आर स्मार्ट इनफ, नोटिस in only one product they have made the alkene. तो ये क्लासिक एलिमिनेशन रिएक्शन है. आंसर वुड बी ए. सो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए. whenever you say RO minus C, RO minus, whenever you say alcoholic KOH or alcoholic NaOH, or if you say ROH plus KOH, बात एक ही है. These are very, very strong nucleophile. They will always go for elimination reaction. और preferably ये तो E2 में ही जाना चाहते हैं. और जितना ज़्यादा बेस हो जाए तो E2 तो होनी ही होनी है. जितना स्ट्रॉन्ग हो जाए उतना बढ़िया E2 हो ही जाता है. दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग अलॉन्ग. सो क्लासिकल एग्जांपल था, एलिमिनेशन ही होनी थी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल देखो बेटा. तो देयर इज अ पैटर्न. 2017 में 2018 में E2 का क्वेश्चन पूछा गया. And they are asking on strong base, so your bases should be very, very strong. You should have a proper idea, and I have given a hint abhi just now that you, whenever you see RO minus, what is I am seeing here? I am seeing MEO minus, ठीक है, plus MEOH. या फिर you can also say alcoholic KOH, alcoholic NaOH, or you can also say KOH plus ROH. If you will see such things, boys and girls, समझ जाइएगा, it is a very, very strong base. It will always go for elimination reaction and it will go for E2 reaction. अगर E2 रिएक्शन जाने वाला है तो चेक दिस आउट बॉयज एंड गर्ल्स. देयर इज अ अल्फा कार्बन हेयर. ठीक है, अल्फा कार्बन हेयर. ठीक है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है ना. हाइड्रोजन यहां पर भी है और यहां तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है. देयर इज नो हाइड्रोजन. देयर इज नो हाइड्रोजन. अगर हाइड्रोजन है ही नहीं तो सिर्फ यहां से हाइड्रोजन मिलने वाला है. एक ही स्टेप में E2 रिएक्शन, इन वन स्टेप बोथ ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन वुड बी गॉन. ठीक है, बेस विल कम एंड टेक बोथ ऑफ देम. एक ही स्टेप में कर जाएगा. ठीक है, इट विल पास थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट. एक ही स्टेप में इट विल रिमूव बोथ. ठीक है, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग. एंड देयर इज हाइड्रोजन, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉयज एंड गर्ल्स. सो आपको दिख ही गया होगा व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. आंसर शुड बी ए. देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन दीज टू ऑप्शन बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. MEO माइनस, RO माइनस जब भी दिख जाए बेटा, RO minus जब भी दिख जाए, it's a very strong base. It will always go for elimination. So there must not be any kind of confusion. This reagent should be crystal clear. If you know the reagent, easily you can find what should be the answer. I hope you're understanding and you got this vital information. I have given that what are the strong bases: RO minus, ROH plus, KOH or ROH plus NaOH. This RO minus, it's very, very important. Or sometimes alcoholic KOH or sometimes alcoholic NaOH. They are all considered very strong base. Goes for E2 reaction. It's a classical case of E2 reaction. Very simple question. I hope you understood it. Now I'll just show you how easy your mains is. So that question would be a homework from my side. A very basic question. A very simple. If you know the theory right,
कुछ सोचना ही नहीं है. If you know the theory right, you can give this answer and it is a homework. ठीक है, मतलब ऐसे सवाल भी जेई ने पूछे हैं. This is a Mains 2015 question, straightforward question. I hope you guys would solve it. This is a homework. This is a 6th question in this Killer 5 series, which is going as homework. So take a screenshot of it and solve the answer, and do comment below what is the correct answer to this question. आपको बनाना है alkyl fluorides, and it is a very straightforward reaction, very named reaction. Let us see if you know. ठीक है? So do answer in the comment box. So boys and girls, if you are liking this and you feel like I can learn more with you, sir, and I can learn more from Vedantu, we have a micro course working on. ठीक है, we have a micro course on. You can actually come here, use my coupon code, hefty discount you will get, boys and girls, 95% off. Use my coupon code HMMIC. MIC stands for micro course, HM stands for me. ठीक है, तो you can learn this particular topic more easily from us. ठीक है, आप हमसे सीख सकते हैं. So boys and girls, if you found something useful, make sure hit like, subscribe and share this as much as possible. ठीक है, so I hope I have brought some value in your life. See you next time.